Hello everyone. We are again back with our SQL course, and now in the second video of our SQL course, we are going to deep dive into the SQL query, and we are going to understand like what all queries are there and how we can execute them to build our first database and the different kinds of table in it. So as you can see on your screen, these are the most basic and the most starting queries which we have to learn. I will give you the basic examples and will give you one complete overview to understand the logic and how the things work under the hood. So as you can see, we are having two queries which are basically used to build a database, like create database DB name, drop database DB name. Okay. And similarly, in order to create a table, there is a special syntax like this. We can use the corresponding DB name and we can create a table with table name and the column name with data type and with specific constraint. So I know you will not be able to understand here. Let me go into my notepad and I will give you the complete brief introduction for a particular example. And with the help of an example, you will be able to understand better. So let me open my notepad and let me give you one example so that you can understand how the things work and how we can build the data and how we can write them. So first of all, as you can see, the most basic queries, and let me go into my notepad. Yeah. So hope you are able to see my notepad, and I will give you the complete brief introduction here. So now as you can see, I am going to give you examples. We are going to deep dive into writing SQL queries. Sorry for any kind of bad handwriting if I am not able to write. With time it will be improved. We are going to now writing SQL queries. So first of all, the most basic queries we can say are creating the database. So database related queries we can say, that is database related queries. Let me take another example so that you can understand. Yeah, so the most basic query whenever you have to create a database is using a create statement. So for creating the database or any table, we will use a create statement. So this you should remember, that is create. So this is the statement. This is the statement we have to use to create any database, any DB or / table. So whenever we have to create any database or table, we have to use this statement, and the syntax is simply create database name. Now, so this is the syntax. Let me write down the syntax first here. Let's take another example and let me take another pen, and this is the syntax. That is create. I think this is pen is not right. Black pen. Let's take black pen and write. Yeah. So the syntax for creating the database we can say is now create database DB name. So now this is the syntax. We can say this is the syntax. Create. This is the complete spelling. Create database DB name. So now, since this is the syntax, if we take any particular example, DB name can be anything. First two words will be same, but the DB name can be anything.
Like if you want to create a DB for HR department, or if you want to create for any company. Let's take an example of Zomato. So you will write the syntax for example, like you will write the examples here. So example can be simply create database. We can say Zomato. So simply a Zomato based database will be created here like this, and it will be referring to Zomato. And inside this database we can say multiple tables we can collaborate and we can build. So this is the simple syntax. For any creation of database we will simply write create database DB name is the syntax. DB name can be variable. So this is the fixed part. This is the fixed part. If I have to write in broad, this is the let's take the blue pen. This is the fixed part, and this one is variable, and this one is variable because it can change according to your need. If you want to name Zomato, you can name it like create database knowledge cache for our company, create database naukri.com, like this. So this is the first statement. We can say this is the first statement. This is the first statement we have to use to create any DB. Then comes the second statement for using the database. Like since we have now created the database, second one is use DB. Which DB we want to use? So we can select that as well. Let me go first of all down. Yeah. So second now, as we can see here, is now using the database. So now simply as the name suggests, using the database, since now we have created the database, or for example, if multiple databases are there, which database we have to use. So let's suppose like we have 4 databases. We have one database like this and its name is DB1. We have second database and we have its name DB2. We have third database and we have its name as DB3. And now the thing is that in our system we are having 3 databases and we want to switch between multiple databases. For example, हमने कभी query run करनी है DB1 पे, कभी रन करनी है DB2 पे. So now you will use DB. हमने create कर लिया. Suppose all these 3 DBs are created. Suppose कर लेते हैं we have these 3 DBs databases already created in our system. And we have to use one of them to run our query. So now we can say here will come the concept of using the database. Since now we can create the database using this command, and we have 3 databases in our system. So in order to use the DB, we will run here the use command. So simply we will go here and we will write, this is the syntax. So first we will write the syntax that use, this is the fixed part here, and DB underscore name. This is the variable part. So again here the same concept. This is the fixed part. This is the variable part. And again we can take the example. Like example, we can write use DB1 for using DB1. Similarly, we can write use DB2 and similarly use DB3. And whatever is needed, we can select both of
whatever is needed. One point important note here I also want to tell you. Wait, whatever is needed can be used. So these are the two most important commands which you should know. Create statement for using for creating database, and for using the database, say if multiple databases are there, we can use them. But the name must be fixed. Like if DB1 is there, so we have to write DB1 only with that name. It can be used. Important note here I want to mention, which I was saying, is that very important note I can mention with this pen. Important note is that at a single time, only one DB can be used. That is the most important point which you should know, कि एक टाइम पे एक ही DB यूज कर सकते हैं. We cannot use multiple DB. So this is the important point to note here, कि at a single time only one DB can be used. So I hope you have understood the concept of using the database, creating the database. Then the third command we can say, which is also kind of, well, these are more than sufficient commands. Like 4 commands are there, and it is more than sufficient. Third command is to show databases. कि for example we, अगर मान लो ये आपसे कोई पूछे यार कि ये कैसे पता चलेगा हमारे को कितने डेटाबेसेस हमारे सिस्टम में, हाउ वी विल गेट टू नो. सो फॉर दैट आल्सो वन कमांड इज देयर टू शो डेटाबेसेस इन आवर सिस्टम. वो भी लिख लेते हैं. यूजिंग द डेटाबेस, क्लीन कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, सेम स्ट्रक्चर. सो थर्ड वन इज दिस, व्हिच यू शुड आल्सो नो, दिस, दैट इज शो डेटाबेसेस. So I can write the description of this command. So this command shows all the databases that are present in our system. That is the important point. कि this command basically shows all the databases that are present in our system. क्योंकि पिछला पॉइंट तो यही था कि यार 3 डेटाबेसेस पता चल गए, उसमें से यूज करना आ गया, बट ये कैसे पता चलेगा 3 डेटाबेसेस है, ये कैसे पता चलेगा उनका नाम क्या है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर. If we will write simply the syntax, so as the name suggests again, simply this is the syntax, that is show db, and here I think the syntax is kind of fixed, that is show databases. Wait, let me check once कि it is databases or database, because this is the general syntax. I also cannot remember, or we can take the reference from my slides. Let me, because structure somewhat I can also forget sometimes. So I think the command is show, yeah, databases. So yeah, that is the important point which you should know. Show databases. So this is the important syntax, and here the important point to note is that entire part is fixed. There is no part variable here, because this is the fixed syntax which you have to use, the show databases. And don't take any kind of tension, you will get all of these notes throughout the course. All the notes which I am making here will be present in some or another form, in the form of PPT or slide, so don't take tension. And the last command we can say, it is very also important, to delete a database. अब ये इसमें थोड़ी अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये डेटाबेस डिलीट करने के लिए सिंपली क्या कमांड हो सकती है, डिलीट कर देते हैं डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस नहीं. दिस इज द कैच हियर. हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस ओनली कि फोर्थ कमांड हमारी क्या है. चलो वो भी डिस्कस करते हैं. So the fourth command to delete a database permanently from the system is shown below.
and the syntax for it is drop database db underscore name. So this is the important point to note here, that the delete command is not there, drop command is there. Drop command is there. Delete command is for table, वो भी आएगी command. Tables की command भी discuss करेंगे, but these are the most important 4 commands related to database which you should know. And this is again the fixed part here, and this is the variable, and it can be of any 4 types. It can be for db1, for db2, and for db3. Let me once decrease the this one is yeah. So now I hope you have understood the concept of what are the 4 commands with the help of which we can deal with our databases and we can use of them as needed. Right, using the database, creating the database, showing all the databases that are currently present in the system, and for deleting the database. And this is the simple concept which you must know. And I hope you have understood. Now we are going to understand all the table related commands also, and what are the different kinds of commands as well as present in our system. So databases commands are completed. Now we are going to understand how we can create a table also. Then we will understand what are the different kinds of commands, and then we will go. So here we are also going to now understand if we sorry wait, let me set it. Yeah, so now the 5th therefore command is, if we because the database part is complete, so we have to do some partition here. Now we have to deal with tables here. Table related command. So now therefore here the concept is that if we have to deal with table related commands, since we have understood with database related queries, so now in order to deal with tables, we can say the first of all command is create command. And for creating the tables, I can say instead of writing, you will be able to find the syntax more good in PPT. So let's go into the PPT, and there you will be able to understand more easily and more efficiently what is the concept. So here we can go. Yeah, so this, since you have now understood create database, drop database, use database. So now here we can go and try to understand that in order to create a table, this is the syntax we can say which we have to follow, that is create table name. So here again, as you can see now, the create table, the blue part, or you can say the light blue purple color, is the fixed part. Table underscore name is the variable part. And then we have to write the particular columns which I have already told you, key VCHR, vertical columns, horizontal rows. So all the columns you will specify here with their data type, with their constraint. So best example you can see is on your right side, create table with a student in which 3 columns are there. So if I have to show you this table, that how this table will be working, it will be simply like this. So I can show you, if we have to show you this table, syntax you can refer, refer from slides. I can simply give you an example. If we take about the student table example, so simply a student table will be there, and it will be created somewhat like this. And inside the student table, we will be simply having 3 columns, and these 3 columns will be having, I think, name of ID, name, and age. So this will be ID, this will be name, and this will be age. So this is the simple concept, and these are all the rows which will be inserted one by one, and these are all the columns inside the student table. So this is the simple concept. Whenever we have to create a table, a student table will be created
with ID, with name, with age, and the rows can be inserted with a particular kind of command. So from this we can say our module 1 is kind of completed. Now we can start little bit of our module 2 and we can understand how these int works, what is this varchar, because I have told you the syntax for creating the table, but I have not told you the data types, I have not told you the constraints. Like you will be saying कि प्राइमरी की क्या चीज है, ये varchar 50 क्या है, ये not null क्या है, why we are writing देखो this thing. So it is not important, क्योंकि कॉलम नेम तो यार हमने अपने आप देना, हम कुछ भी दे सकते हैं, हम ID नेम एज दे सकते हैं, हम कुछ भी मतलब anything we can give it is ID1 name1 name2 age2. So it can be anything, but the important point here to note is what are these data types and constraints. So now let's start our module 2 as well in this video only. So module 2 we are going to understand what are the different types of SQL commands, and we are also going to understand first of all the important point here, what are the different kinds of SQL data types which are present. So here you can simply follow this chart and it is more than sufficient. You can simply take the screenshot and keep in your working place, keep in your mobile and whatever, and you can refer them, because with time you will be able to remember, but these are the most commonly used and important data types. And what are the simple meaning of data types? They simply define the types of values that can be stored in a particular column, which I was telling you. Each column has a specific data type, and inside that column that values can only be stored. Like the name, if it is present in varchar, varchar can be simply string like name Veer. Similarly, name can be anything else, so it will be same throughout. So these are the different data types which you can simply see, like char, and this is how you can use them. Most of them, the most common are these only: varchar, int, float, double, and date. These are the most commonly used data types, I can say: int, float, double, date, and varchar. Varchar like 50 simply means that it can store characters up to length of 50 characters. That is the simple meaning. And char means it can store the characters of that fixed length only. So that's why varchar is mostly used and it is the most frequent one. So this is the simple meaning of SQL data types. Important point to note here I want to mention is that in a particular table, now important note point is important this, that if we take the important note is that in a particular column of a table, only one data type values can be inserted. So this is the most important point to note here, that किसी भी एक टेबल में एक कॉलम के अंदर हम एक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. क्या मतलब है? लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दिस. जैसे ये हमने मान लो सपोज करो एक टेबल है जिसके अंदर सिर्फ अभी मान लो 3 रोज हैं, जो हमने सेम एग्जांपल ऊपर लिया: आईडी, नेम, एज. नाउ वी नो दिस थिंग. आईडी क्या होगा? आईडी का डेटा टाइप क्या होगा? खुद सोचो. आईडी, रोल नंबर, इनका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3. कभी आपने ऐसा देखा है रोल नंबर 1.1 रोल नंबर? कभी हुआ नहीं. रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख लो, रोल नंबर देख लो, कस्टमर नंबर देख लो, कस्टमर आईडी देख लो, ऑल दिस थिंग्स आर मोस्टली इंटीजर ओनली. सो इट विल बी एन इंटीजर. ठीक है. एज क्या होगा? ये भी आप खुद सोचो, गेस करो. सपोज क्या हो, मैं आपको 2 सेकंड के पॉज देता हूँ. ये भी इंटीजर होगा. बिल्कुल सही. कभी आपने किसी की एज देखा है मेरी एज है 35.5 है? नो. हम बोलने को बोल देते हैं, बट अदरवाइज एज इज ऑलवेज अ होल नंबर. मेरी सो एज विल आल्सो बी एन इंटीजर. एंड नेम क्या होगा ये आप खुद बताओ. सो नेम विल बी varchar. क्यों varchar? हर जने की नेम की अपनी लेंथ हो सकती है. किसी का नेम हो सकता है वीर गर्ग, किसी का नेम हो सकता है सुखमन प्रीत कौर, किसी का नेम हो सकता है शिवम सहगल. सो एवरीवन हैज डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड इट इज अ स्ट्रिंग. सो दैट्स व्हाई यू विल बी हैविंग varchar there. सो अब मतलब यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नेम के अंदर लिख दिया 1, सो ये रॉन्ग हो जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेम एक varchar है. आप नेम में वीर लिख सकते हो,
इट इज करेक्ट। सिमिलरली एज में फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वीर, ये रॉन्ग है क्योंकि एज एक करेक्टर है। सो एज में आप क्या लिख सकते हो 25, इट इज करेक्ट। आप लिख सकते हो 99, इट इज करेक्ट। सिमिलरली आईडी में आप लिख सकते हो 1, इट इज करेक्ट। सो मतलब सिंपली यही है कि इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ टेबल ओनली वन डेटा टाइप्स वैल्यू कैन बी इंसर्टेड। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कॉलम के अंदर ही इंटीजर वैल्यूज भी आ रही हैं, फ्लोट वैल्यूज भी आ रही हैं, वेयर कैर वैल्यूज भी आ रही हैं। नो, इट इज नेवर पॉसिबल। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वाज टेलिंग हियर एंड इट वाज इंपॉर्टेंट टू नोट। एंड आपको ये भी बता दिया कि मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। आपको मैं लिस्ट भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स आर दीज, that is the int which we write int integer values, then second one is varchar। ये मोस्टली ये दो सबसे ज्यादा यूज होंगे। सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ प्रॉपरली नहीं आ रहा। सो स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। देन वी कैन से, थोड़ा लाइन मार के बाइफरकेट कर दे। देन थर्ड वन वी कैन से हियर इज फ्लोट डेसिमल वैल्यूज, फ्लोट एंड डबल भी आप कह सकते हो। एंड द फोर्थ वन इंपॉर्टेंट वन इज डेट। मान लो आपने कॉलम में डेट वैल्यू रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, मॉडिफिकेशन डेट क्या है, ये कॉलम्स की फील्ड आपने रखनी है। सो देन इन दैट केस लाइक इन dd mm y फॉर्मेट। So ये four mostly we can say are the most commonly used data types which you should also know. So ये भी आपको समझ आ चुका है। Okay, and these are some, I can say some specific data types advanced topics कि like integer को हम unsigned भी लिख सकते हैं अगर हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। कि like अगर हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है 1 2 3 4, देन कुछ भी मत लिखो, तो इट विल बी फ्रॉम कंसीडर फ्रॉम -128 टू 127। बट ये फॉर टाइनी इंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज फॉर टाइनी इंट। इंटीजर की रेंज ये है, दैट इज -2 पॉइंट ह्यूज टू समथिंग दिस। सो इसलिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ लेना चाहते हो, देन यू विल राइट इंट अनसाइंड, इंट अनसाइंड, दैट इज द सिंपल पॉइंट। एंड नाउ हियर वी कैन से दिस इज आल्सो वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स, जो मैं आपको उधर बता रहा था कि प्राइमरी की का क्या मतलब है, नॉट नल का क्या मतलब है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो, किसी भी कॉलम को आपने लिखना है तो सबसे पहले कॉलम नेम इन अ टेबल, देन डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट, देन इट्स एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। एंड एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर सिंपली यूज्ड टू स्पेसिफाई द रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। जैसे कि कोई कॉलम वैल्यू है उसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकती, सो ये देयर यू विल राइट, बिकॉज नल भी एक फील्ड है जो आप लिख सकते हो कि मेरा नेम नल है, जो कि वैसे तो पॉसिबल नहीं है। नेम में तो नल नहीं आएगा, एज में भी नल नहीं आएगा, आईडी में भी नल नहीं आएगा, बट यू कैन कीप। सो दीज कैन द कॉन्सेप्ट्स, कॉलम्स कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, सो यू विल राइट कॉलम 1 इंट नॉट नल। सो दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट, sorry not null is one of the constraint। similarly unique is one of the constraint कि all the column values in different rows will be unique। all values in column means all rows in that column will be unique। similarly primary key concept which is the combination of not null and unique, कि makes a column unique and not null only for one value। important point is that primary key constraint सिर्फ एक ही कॉलम को दिया जा सकता है, मल्टीपल कॉलम्स को नहीं दिया जा सकता, ओनली यूज फॉर वन इन अ पर्टिकुलर टेबल। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। एंड सिमिलरली फॉरेन की, ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा, अभी आप सिर्फ इतना याद कर लो, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, एंड इनको यूज कैसे करना है। आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा इन सबका मतलब क्या है, कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो, लाइक सैलरी इंट डिफॉल्ट 25,000, ये डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर दी। सो दीज आर सम
constraints which you can use. Okay, check is constraint. So these you can simply refer to our PPT, because with time, with more and more questions we will solve, you will be able to understand them more. Okay. Now we will be going to understand these constraints more over in next video. अब मैं आपको क्या कहते हैं, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ अबाउट 2 SQL टूल्स, कि आप असली में एक टेबल कैसे बना सकते हो और वैल्यूज देख सकते हो, एंड व्हाट आर द 2 मोस्ट SQL ऑनलाइन टूल्स विच यू कैन यूज. चलो चलते हैं अपने ब्राउजर पर. So I hope you can see my browser and you are able to see it. So first of all, the concept here, as you can see here, is that we are having 2 tools. One is Oracle Live SQL and one is MySQL Online Editor, which we have to use. And let me initialize it with beginning, and here we will be able to understand what all concepts are there. So first of all, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा 2 SQL editors are there which you can use for using or for running your queries. One is the Oracle Live SQL. I can open you and tell you as well. One is Oracle Live SQL. You can refer this as well. And the second one is MySQL Online Compiler. Oracle Live SQL में क्या है? It is also very good, widely used across the industry as well as in colleges. But इसमें कुछ commands का structure अलग है. Oracle Live SQL थोड़ा सा MySQL से अलग हो जाता है. So that's why throughout this course I will be using this MySQL one online compiler, and here I am going to show you the demonstration कि आप simply कर कैसे सकते हो. Okay, so now here first of all simply I am creating a table, and here this is the syntax which you can see, जो हमने आपको बता भी दी है. Create table users ID int primary key auto increment. So now here therefore the constraint is that we are using this as the column, integer is the data type, and these 2 things are our constraints. अब auto increment आपको एक नया मिल गया. So ये भी तो टाइम है. auto increment simply means जब भी प्राइमरी की अब इनिशियलाइज होगी अपने आप वो इंक्रीमेंट करता रहेगा. अदरवाइज इसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट करने की जगह प्राइमरी की रख के जब हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तब हम सिंपली यही कर दे इंसर्ट इनटू यूजर्स. अभी मैं ये मानता हूं कि आपको ये 2 क्वेरीज नहीं आती होगी. सो दीज आर ओनली द क्वेरीज. और यहाँ पर क्योंकि हम डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपको वो भी कमांड लिख के बता देता कि अगर हमने डीबी फॉर एग्जांपल क्रिएट करना है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डीबी, तो हम सिंपली ये कमांड यूज कर सकते हैं, लाइक क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स. बट ये कमांड यहाँ रन नहीं होगी बिकॉज इन ऑनलाइन एडिटर्स द प्रॉब्लम इज दैट ये कमांड हम यूज ही नहीं कर सकते. तो सिमिलरली यूज स्टूडेंट्स. बट ये मैंने आपको 2 कमांड्स बता रखी हैं कि क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, यूज डेटाबेस डेटाबेस नेम, एंड ये करेक्ट कमांड्स है. बट ये यहाँ पर रन नहीं होंगी बिकॉज ऑनलाइन कंपाइलर एडिटर हमारे को डेटाबेस क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी ही नहीं देता. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू कैन नोट हियर. एंड सिमिलरली वी कैन क्रिएट द टेबल यूजिंग दिस कमांड. तो अगर हमने इसको रन करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके हम रन कर सकते हैं एंड इससे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा. होप सो द इंटरनेट इज वर्किंग फाइन. आई थिंक मेरे को इसको पूरा ही रन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके भी रन नहीं होता. आई थिंक इसको हम रन करते हैं बिकॉज सिलेक्ट करके रन आई थिंक इसमें नहीं पॉसिबल. सो नो रन. ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि इंसर्ट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है. सो तभी आपको दिखा पाएंगे कि कोई वैल्यूज जब तक इंसर्ट नहीं करेंगे सो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू शो यू. सो दैट्स व्हाई द इंसर्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली insert into table name the values which I have written earlier. So in order to show you the insert command, simply I have to write first of all create table name, and then we can write the insert command here, that is insert into table name which is the users, and we can simply refer to like them this.
that is insert into users the corresponding fields like ID, name and age. ये सिंटैक्स मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा, बट अभी ही आप रिमेंबर कर सकते हो that for inserting the values inside the table simply the command is insert into जो कि fixed part है, then table name with the corresponding values and then you can simply write values. ये part भी fixed है, insert into table name corresponding values and then you can simply write whatever values you have to insert like this 1 comma Veer Garg comma my age is like 21 and now the concept is that we can insert multiple values as well, but अभी आपको मैं सिर्फ एक insert करके दिखाने वाला हूँ यहाँ. And for in order to show the table, now in order to show the table also this is the command select star from table name that is users. So now अगर run करते हैं तो ये table आपको दिख जाएगा. So as you can see now here a table is created with ID 1 with name Veer Garg and with age 21. So this is the command and I think comment लगा सकते हैं आप. Yeah. So this is the command to insert into the table. This is the command to show the table. And this is the command to create the table. That is create a table. So to show the table, insert into table and to create a table. Okay, so now since you have understood this as well, now the concept here comes important that कि हमारे पास different types of database commands कौन-कौन सी हैं. So वो भी आपको चलो बताते हैं. Since you have understood this as well, so now let's understood that as well कि what are the different kinds of commands. And today only in this video as well, we are going to understand that completely. What are the different kinds of commands and how we can execute them. Let me do full screen first and then we will see that as well. Since we have understood these constraints, this we will do in next video. We will not take here primary. This we have understood how we can create two tables, student and city. Keys concept we will do in next video. This is the very important point which I was telling you here. The most important point, very important from interview perspective. This is the complete, I can say, blueprint of your database and SQL. There are 5 different types of SQL commands which you should know, and these 5 commands are basically classified based upon their functionality, like DDL commands, DQL commands, DML commands, DCL commands and TCL commands. इसको learn कर लो जितनी जल्दी possible है, because this is very important. DDL commands are simply the commands which are data definition language. DDL commands का simply मतलब क्या है? All those commands which can be used to alter the table structure. मतलब जो भी commands table structure से related है, जैसे create table, alter table, rename table, truncate table, drop table, then these are the this. DQL commands are data query language, जिसके अंदर सिर्फ एक command है, कभी भी हमने table में values देखनी है. अब वो पूरा table देखना है या एक row देखनी है. So DQL commands are data query language. Similarly, DML command, data manipulation language, that is insert, update and delete. And these are the commands which are used for data. DCL commands are for using granting and revoke permission to users, and TCL commands are for transaction control language. चलो मैं आपको एक बार लिख के ही बताता हूँ कि कौन सी कमांड हमने कब यूज करनी है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि डेटा टाइप्स कौन से हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, so let's understand that as well कि what are the different kinds of TDL commands, because very important I can say. I am giving you, हम नेक्स्ट वीडियोस में बार बार इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ DDL commands. So now here as you can see we are going to understand this only, what are the different types of SQL commands. Most important, the first one, DDL commands, and DDL as the name suggests, data definition language. So now the most important concept is that the DDL commands are those commands which are used
whenever we have to deal with the structure of data. So these commands are used to deal with the structure of your table. This is the most important one. DDL commands are simply those commands which are used to deal with the structure of table. These commands are related to schema. And what is the meaning of table schema? I can say that how we will create the table. टेबल का नाम क्या होगा, टेबल में रो ऐड करनी है, नो रो नहीं, कॉलम. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको भाई ये टिप्स दे रहा हूँ जो दीज आर वेरी वेरी सीक्रेट्स, वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो सिर्फ लर्निंग के साथ आते हैं. कि डीडीएल कमांड सेंस टेबल के स्कीमा के साथ होती है. तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि डीडीएल कमांड में हमारी कौन सी 5 कमांड आती है. तो सबसे पहली कमांड है क्रिएट कमांड. हमारी सेकंड कमांड है ऑल्टर कमांड. हमारी थर्ड कमांड है ड्रॉप कमांड. फोर्थ वन है ट्रंकेट. एंड फिफ्थ वन है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, and I think fourth one was rename. Fifth one was rename. Yeah. So now the important concept is that create command क्या करता है, ये हमारे को ऑलरेडी पता चल चुका है. कभी भी हमने टेबल को क्रिएट करना है, दिस कमांड इज यूज्ड. या डेटाबेस को क्रिएट करना है, सो क्रिएट कमांड इज यूज्ड. Alter command is therefore used whenever we have to alter any column. Very important point here to notice that since हम टेबल के स्कीमा की बात कर रहे हैं, सो टेबल के स्कीमा का मतलब है कभी भी हमने कॉलम को ऐड करना है. सो here important concept is this. Rename command simply means renaming a table or column. So I can mention here कि how these commands are related. Like the create commands mean for database or for table. Create command is used then we can say alter command. Very very important. Command is used to deal with columns of the table. Like कभी भी हमने टेबल के कॉलम को रीनेम करना है, कभी भी किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है. जैसे मान लो आपने गलती से रख दिया यार, हमने नेम को इंट रख दिया, सो देयर वी विल यूज द ऑल्टर कमांड टू चेंज द डेटा टाइप. सो दैट्स व्हाई ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू डील विद द कॉलम्स ऑफ टेबल, लाइक रीनेमिंग अ कॉलम, changing the data type of a column, and etc etc. हम और भी एग्जांपल्स इसके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो. अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ कि व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स एंड डीडीएल कमांड्स के अंदर ही कितने अच्छे कॉन्सेप्ट है कि दीज कमांड्स आर यूज्ड टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. टेबल के स्कीमा से रिलेटेड है. क्रिएट कमांड से हम डेटाबेस से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. ऑल्टर कमांड से हम रीनेम अ कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम चेंज कर सकते हैं, जो कि कॉलम से, कॉलम स्पेसिफिक पॉइंट में आपको नोट यही यहाँ पर बार बार दे रहा हूँ, कॉलम से, क्योंकि रो से नहीं डील कर सकते हम ऑल्टर कमांड से. सिमिलरली ऑल्टर एंड ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड अगर हम बात करें तो वो भी सेम इसी में काम करती है.
बस डिफरेंस थोड़ा है, बट ऑल्टर एंड we can say drop and truncate command are used to delete the columns और table. अब ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप ये बोलोगे यार वीर, अगर कॉलम और टेबल को डिलीट करने के लिए तो रो को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड है? दैट इज डिलीट कमांड. दैट इज द कॉन्सेप्ट कि रो को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, कॉलम या टेबल को ड्रॉप कमांड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम. ट्रंकेट हम अभी देखेंगे कि डिफरेंस क्या है. एंड सिमिलरली कॉलम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. एंड सिमिलरली लास्ट वन इज द रीनेम कमांड. एंड रीनेम कमांड का भी अब सेम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रीनेम कमांड से हम सिर्फ टेबल को नहीं रीनेम कर सकते हैं, कॉलम को नहीं. कॉलम को रीनेम करने के लिए ऑल्टर कमांड यूज करनी पड़ेगी. ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होने चाहिए. रीनेमिंग अ कॉलम, ऑल्टर कमांड. रीनेमिंग रो हो ही नहीं सकती रीनेम, क्योंकि रो का कोई नेम ही नहीं है. रो तो एक फील्ड पूरी वैल्यू है. कॉलम रीनेम करने के लिए ऑल्टर कमांड, टेबल रीनेम करने के लिए रीनेम कमांड. रो रीनेम ही नहीं हो सकती. सो देयरफॉर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ rename command is used to rename a table. Syntax अभी हम देखेंगे. So this we have now since also understood what is the concept of DDL commands and how we can use these commands to understand. Now in our next video we will be going to understand the 4 other kinds of your SQL commands like DDA, DML commands, your TCL commands, and how we can use these commands in real life, and we will run all these commands in our SQL Live Editor as well. So till then, take care, goodbye, practice करते रहो. And अगर आपको कोई भी query है, then you can connect with me over LinkedIn and you can ask your doubts over there. I will be surely and love to help you all of you. And hope करता हूँ कि आपको lecture बहुत अच्छे से समझ आया होगा. And hope I am able to deliver best. And मिलते हैं next video के लिए. Till then, bye.